So thank you very much, Star Nawaz. The first ball nicely driven in the gap towards the deep cover point region. They're running hard, and before the fielder from deep extra cover to collect the ball down at deep cover point region. Both the batters are completed only 2 runs because of one shot which is called by umpire. So they run 3, but they will going to get only 2 for that. A slight bit of unfortunate sometime because maybe that reaper which is maybe above the ground level, which is situated in the crease, so that might be the problem for the batters once they try to drag the bat will go into stuck in that reaper, so they couldn't manage to cross that line. 2 on the board without loss of any wicket. Chetan again bowling from the far end. Right arm over the wicket to Naufal. This time it's going to be opportunity for the mid-on fielder. Naufal departs and Chetan strikes with a huge wicket. Again, problem continues here for team Suragiri strikers. They once again they couldn't manage to get the good start what they're looking for. Naufal played that across the line, tried to swing that one. He got a top edge. And mid-on fielder making no mistake at all. Chetan again they starts well with the bowling. It's 2 for the loss of 1 wicket. The new batter in is Vinod Pollard is coming to bat here. Some promotion which is given to him. Maybe the reason that they need to take the advantage of the power play. The early breakthrough lost the wicket of Naufal, icon player. Now all responsibility now with the Vinod as well as Nizam to anchor the innings. Chetan. This time catch it is a call, a shot of that fielder. Santosh down at square leg. They completed a single that again not really controlled sweep shot there from Vinod Pollard. Played it very dangerously and he got a single for that. With that single he's off the mark. Scoreboard now was on to 3 on the board without loss of any wicket in the little correction, 3 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Shot mid off deep extra cover, shot cover point, shot third man, shot fine leg, square leg behind and in front of the square. This time again looking for the expansive drive. We know the one's a run chance of run. Chetan misses the stumps. Chetan misses the stump. Otherwise going to be a wicket number 2 here for team Kulshekar friends. Kulshekar starts well in this tournament but not really able to continue that start what they got and they faced a defeat afterwards. But they got ability. They got some good players in the side to bounce back again. This time appeal for something there. Looks like they're for what they're appealing. I want to see umpire. Yes, asking for the stump out. Yes, square leg umpire Arish Padil asking for the third umpire to see whether the batsman short of his crease or not. It's appeal for stump out and square leg umpire asking to third umpire Roland Pinto sir to see the stump out which is done whether the batsman is safe or not. Jalil, the wicketkeeper behind the stump, maybe is saying that is automatically done. Even though they're automatically done, you need to see that the back foot of the batters whether is drags his back leg inside the line when it was automatically done. Now M9 Sports, I'm sure that they're really a very specialist as far as live telecast is concerned. The technicians and cameramans will going to give absolutely perfect angle to get the result of that stump out. Need to see. It's all up to the technicians as well as the third umpire to see whether it's going to be
out or not out. But meanwhile, we are just coming to this day number one of Kudla Premier League Season 8. Absolutely, it was a very successful day number one of this Kudla Premier League 2023. We are witnessing some excellent performance from all the teams. And some good batting performance. Of course, in the day matches, we are witnessing some unbelievable cricketing strokes from the batters. But afterwards, under floodlights, some good bowling performance we can see. That means it's going to be equal for the batting as well as for the bowlers, the day number one. And still the decision which is pending there to see that the batter safe or not. The heartbeat of the batsman which is going to be a very high, and even heartbeat of wicket keeper Jalil maybe is thinking about if it is going to be out, then it is going to be a yes. He might be the very satisfied wicket keeper behind the stump. So 3 on the board. They lost 1 wicket. As far as the rules and regulation of this cricket is concerned, the batsman, if it's a boot which is on the line, which is not good enough, they need to some part of your boot to be inside the line. That's what umpire need to see, whether any part of his shoes which is inside the line or not. But still, it's a very difficult one. It's a touch and go for the third umpire to see. Meanwhile, for the latecomers, you are watching the last match of the day number one of this prestigious cricket tournament. Today morning, the inaugural ceremony which is held here in Suragiri ground under the presence of the chief guest Kiran Kumar Kodikal and Sandhya Madam, and as a member of Mangalore City Corporation, inaugurated this KPL season 8 with the presence of Kamalaksha Kundar, president of Urva Friends Cultural Association. Not out, which is a call from umpires, so batsman safe. And thank you for third umpire Roland Pinto after getting some good angle from the technicians of M9 Sports to get the best result of the previous deliveries appeal, which is coming behind the stump. 3 for the loss of 1 wicket. Nizam will going to face Chetan. This time looks like it's going to be a chance of run out. This time directed. But again, there is a third umpire will going to comes into play. Wide call by umpire. So that if it is a run out, then only 1 run. If it is a not out, then it's going to be a wide 2. So 2 continuous third umpire decision which came here. When there is a direct, it is always going to be a touch and go. The most of the times when it's a direct, it is always, we can see that 80, 90% which is going in favor of fielding team. But it is not necessary to be here. The male batsman may be the safe. Just want to see that Vinod Pollard, you can't say anything because Vinod Pollard is a kind of player, he's always having a smiling face in his face. Smiling face, whether any condition. So that it's very difficult to read his pace, whether he is safe or not. Let's wait and see. So one more testing time here, not only for the technicians of M9 Sports, but even for the third umpire. We need to appreciate under-arm cricket. They need to appreciate under-arm cricket because in a limited option we are getting, and only 2 to 3 cameras we are getting the angles, but still they are trying their hard, trying their best to make this cricket tournament very successful one. Time is exactly 10 past 35. The day number one of this cricket tournament, 3 days of day and night cricket tournament. So not out call from umpire. Again,
Both the batsmen survives in a two consecutive deliveries after Nizam survived from the third umpire decision. Now it's Vinod Pollard and he survived from that run out. Scoreboard is 5 because 1 plus 1, 2 run which is completed. 5 on the board for the loss of 1 wicket. Chetan again bowling from the Vision India end. Right arm over the wicket delivers. We're not going for the expansive again, not really getting that one. Got an inside edge of the bat. Good over there from Chetan. Just 5 from that over. Good start here for Kulshekar friends and team Suragiri strikers are really getting lit again. Not a good start. Lost 1 wicket, the wicket of their icon player Naufal, and they managed to get 5 on the board. But I think still there 7 overs remaining. It's good enough for any team to back in the game if you play sensibly. Of course, it's not necessary that in the power play you need to go for the big shot. But even the singles and couples is always going to be handy, especially in this condition. Nizam is on strike. The bowler is on attack. One who really bowled excellent overs in the previous match for Kulshekar. Friends, it's Imtiaz. Again, umpire says it's not out. Imtiaz bowled one more very good off-cutter in dedication. Again, the batsman is safe. Imtiaz, very experienced campaigner and very cool customer. Very decent player, which is produced for underarm cricket. This time, hit that one right in the gap towards a deep square leg. One bounce. What a magnificent effort! But it will going to be good enough. They need to wait and see whether the fielder to stop the boundary or not. But umpire Anish Patel is saying that is the boundary. Ball touches the wall. Even that great effort that from the fielder, it is good enough, not good enough. Pradeep, I think so, there in the deep mid-wicket region. Is one of the best fielder in the deep, but not good enough. Have a look at that one, a replay ball which is played in the air after 1 bounce, 2 bounce, and have a look at the effort there from Pradeep. But unfortunately, that effort which is gone in vain because the boundary signal by umpires. 9 on the board for the loss of 1 wicket. Imtiaz to Nizam. This time Nizam sings it and sings it hard. Again the chase here for the fielder and Pradeep will won't get that. This time it is 1 bounce, 2 bounce into the fence for 4 runs. Nizam is playing some outstanding cricketing stroke. One of the difficult stroke to play in the book whenever the bowlers like Imtiaz bowling that such a good line which is outside the line of off stump. Have a look at that. He almost drags that one from the off stump and hit that one into the vacant area down to deep square leg boundary for 4 runs. Magnificent slog sweep shot came from the bat of Nizam. It's 13 on the board. Suragiri strikers, they're back in the game in the second over. Nizam playing a very important role here. 2 back-to-back boundaries. Now 1 fielder which is situated down to deep square leg. After that 2 good cricketing stroke came from the bat of Nizam. They kept 1 fielder at deep square leg there. Let deep mid-wicket vacant. Driven that one very nicely towards a deep long on. Protection has been given in the deep long on so that they need to settle for the single. And before the throw coming from the fielder Pradeep, there is ample time for the batter to complete the single. 14 on the board. Very good over for Suragiri strikers so far. Again the appeal for leg before wicket. Umpire says it's from the bat of the batter so that no question of leg before wicket. 1 more addition to total addition of that single scoreboard moves on to 15 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. The first over only 5 runs. That means 10 runs already came from that over of Imtiaz. Bowling away from us. This time misjudgment by the Nizam. Ball well within the reach of the batter. Just a couple of inches inside that line. After completion of over number 2, it's 15 for the loss of 1 wicket.
And good over turning out to be here for Suragiri strikers. They got 10 runs in that over. Thanks to that, two very good slog sweep shot came from the bat of Nizam to get that 10 runs in that over. So bowler will go into ball from the far end. Vision India. Again, that ball just passing around the legs of Vinod. Then it's going to be a dotted delivery. Sukesh from the far end, Vision India end, round the wicket. Wicketkeeper Jalil fails to collect the ball, so that it's going to be a 1+1, 2 to the total with that extra score Namuzanto, 17 on the board. All these extra runs will going to play a big role in the result of this match. Round the wicket, Sukesh again. Nicely driven, right in the gap, but not more than a single. They are running hard. We know this is a good runner between the wicket. Even Nizam also. They just wanted to see that the fielder will going to do the mistake. But with the neat collection from Pradeep at deep extra cover, so that no question of second run. 18 on the board. Sukesh again. This time he went for the big shot, mistimed cricketing stroke, and fielder just going back and completed the catch. Vinod Pollard absolutely got a short pitch delivery. What he wanted to do is to deliver that one mid wicket region. But it might be early into the strokes and the top edge ballooning up in there and a short mid off fielder. Have a look at it one replay. Slight a bit of short pitch delivery and he went for the big shot. Not really able to get under that one from the middle of the bat. And fielder in that short mid off region quickly moving back and taking a position quite rightly and completed that catch. It's 18 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. So new batter in is Harris. He played a very good innings in the previous match. The good striker of the ball. Harris have to do something special for his team. This time full toss, but it's a low full toss. It's a low full toss and Harris wanted to play that one in a different line. It's a low full toss outside the line of off time, but he swings that one on the, wanted to swing that on the onside region, misses the line completely. Then it's going to be a very important dotted ball from Sukesh. Appeal for leg before wicket. Umpire not impressed with that appeal. Maybe that ball slight a bit of pitching outside the line of leg stump, leg by ball by umpire. One more addition to total with that addition of that single score, but Namuzan to 19 on the board for the loss of 2 wicket. Sukesh is a different kind of bowler, giving a lot of flight in the ball, but he's almost using his shoulder. Have a look at that one. He's rolling his hands to get some extra pace in the ball, and sometimes it's really very effective, but if you bowl the shot, it's going to be asking for trouble. So good comeback here by Sukesh, and after completion of over number 3, and Suragiri strikers are 20 for the loss of 2 wicket and 3 overs which is completed.
Dhanraj brought into attack from the commentary box hang to ball the fourth over of the innings of Suragiri strikers. And Nizam so far he's been really good in the middle, as they are very confident, especially in the second over and third over. Again, nicely driven. The placement is exquisite. Have a look at that running between the wicket. But this time, I think more than that, the quickness of the batters in the middle, the quickness of the fielder in the deep extra cover has been outstanding. Denying the second from this to batter. Excellent work by the fielder at deep. It's 21 on the board for the loss of 2 wickets. Dhanraj bowling away from us. This time he went for the reverse sweep. Zalil behind the stump. Kept the ball. Slight a bit of that ball is after hitting the leg of Nizam, ballooning up in the air. And no contact with the bat, so that no appeal coming from behind the stump. Again, cuts that one down to short third man region for a single by Harris. Slight a bit of fumble, but it's very difficult to get a couple of runs when there is a fielder like Azmal is always sometime quite purposely making some mistakes so that they can get the run out. It's 22 on the board. Again, nicely placed that one, Nizam. This time the running hard. Again, it's a very good piece of fielding there by Imtiaz in the deep extra cover region, so that it's no question of second run here. It's 23 on the board. Both the batters are dealing with the singles in this over. Dhanraj bowls again. Driven straight to the hands of short mid-off. Fumble from the fit fielder there. And both the batters are completed the single easily. Altaf Walpadi down at short mid-off. The fielder. It's 24 on the board for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket, Dhanraj. Improvisation. Just for a single. Not more than that. So they are not really wasting the deliveries. So converting each and every deliveries into scoring one. 4 gone after completion of over number 4. Suragiri strikers are 25 for the loss of 2 wickets, and projected score will be the 50. If we manage to score in the same run rate, they will going to get a 50. And if we manage to get that 50, then it's going to be a good total to depend under this condition. And wait and see how well they manage to play that remaining 4 overs, and wait and see how well the bowlers of Kulshekar friends will going to restrict the runs of their opposition. Everything coming in front of you with the voice of my friend Mr. Gopi in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। सो 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन 5वें ओवर की शुरुआत, और सूरगिरी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज ने 1 रन लिया 5वें ओवर की पहले गेंद पर, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर स्कोर अगर खड़ा करना है तो कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा यहाँ पर सूरगिरी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। और गेंदबाज सुकेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। आज का 10वां और अंतिम मैच इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ, और सुकेश गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट दिस टाइम, एंड दिस टाइम आई थिंक इज लॉस्ट हिज विकेट इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स, और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। और इस बीच विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिर चुका है। Harris की पारी समाप्त। Just gone for a big one. I think it's got an inside edge on that at the last moment. Just tracked onto the stumps, and that is the wicket number 3 for them. So cleaned him up. Absolutely no contact between the bat and ball. Just cleaned him up, and he lost his wicket in the face of bowled. 26 for the loss of 3 wickets at the start of the 5th over. रात के 10:45 यहाँ पर बज चुके हैं, और निस्संदेह दिन इस वक्त देर रात की ओर बढ़ता हुआ। इट्स ऑलरेडी 45 past 10 in the night, and the night is now heading towards to midnight.
और दर्शकों की तादाद कुछ हद तक कम हो चुकी है। पिछले मैच में जितने दर्शक दिखाई दे रहे थे उससे कुछ कम दर्शक यहाँ पर दिखाई देते हुए, और यहाँ पर आज का अंतिम मैच खेला जाता हुआ 10वां और अंतिम मैच, 10th एंड लास्ट मैच ऑफ द डे, वन ऑफ प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KPL कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। ये गेंद टॉप एज, मौका हो सकता है फील्डर मिड ऑफ के नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, एक्स्ट्रा बाउंस अंतिम गेंद पर और टॉप एज पर टकराए, और आखिरकार आसान सा कैच लिमिट ऑफ फील्डर इस वक्त लपकते हुए, और इसी के साथ विकेट नंबर 4 यहाँ पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज शमराज निजाम इस वक्त मौजूद, आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे। अभी तक क्रीज पर डटे हुए 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए निजाम बैटिंग ऑन 15, और उनके सामने 4 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं। स्कोर है इस वक्त 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 26 for 4। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट नए बल्लेबाज के लिए। गेंदबाज सुकेश तैयार, मुस्तफा सामना करते हुए, ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन दिस टाइम, हैट्रिक, ही क्लेम्ड a hat-trick. So this time the batsman the bowler just got the rid of the batsman. I want to look at in the replay. देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, मैं देखना चाहूंगा रिप्ले में। गेंद लगभग जमीन के बल्ले के अति निकट टिप्पा खाई थी इस वक्त, और बल्ले और पैर के बीच में कुछ अंतर शायद बल्लेबाज ने छोड़ा था, और यहाँ पर ये गेंद फेंकी थी। देखिए एब्सोल्युटली दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटी फ्रॉम द बॉलर सुकेश, एंड ही टुक द हैट्रिक। So first hat-trick of the tournament went into the name of Sukesh, claimed 3 consecutive wickets in the 3 consecutive deliveries, 3 successive deliveries, and first hat-trick came from the hands of Sukesh. So 26 for 5, now they are looking in trouble, और इस वक्त इंतजार है नए बल्लेबाज का। तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 3 विकेट इस ओवर में गिर चुके हैं, और गेंदबाज सुकेश सफल और अब तक उनका साबित हो चुका है। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और 1 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, और लेग पाई का इशारा अंपायर का, और लेग पाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, 27 on the board, 5 wickets lost for Suragiri strikers. Still the batsmen of Suragiri strikers searching for the right track. 3 overs left in overall calculation in their innings. 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। So 6th over starts in their innings. 6ठा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त पहली गेंद को खेल दिया इस वक्त शॉर्ट कवर पर, और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 28 नाउ। 6th ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए धनराज दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार क्रैक्स इट अवे, दिस टाइम डाउन टू डीप बैक ऑफ द थर्ड मैन, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 16 प्रोग्रेस। स्टिल 2 overs टू गो आफ्टर दिस वन, और गेंदबाज इस भी तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रन। कम से कम 50 के आंकड़े तक इस वक्त पहुंचना होगा सुरागिरी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो अगली गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मस्ट ओवर लाइन, एंड बीटन कंप्लीटली बाय दैट फ्लाइट, एंड द बॉल कलेक्टेड बाय विकेट कीपर behind the stumps. Just change of pace from the bowler, and
he beaten the batsman completely in this delivery. और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज धनराज once again beaten. Good one. Absolutely 2 consecutive dot balls और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है 30 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर और धनराज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चिप गया स्ट्रेट ओवर द बॉलर सेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर. One more wicket fallen. It's 30 for the loss of 6 wickets. तो इस वक्त गेंदबाज तैयार. तो इस वक्त 6 overs completed, 30 runs on the board, 6 wickets lost, and now just 2 overs left in the innings. 2 ओवर का खेल बाकी उनकी पारी में और 7वां ओवर उनकी पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ आज का अंतिम मैच, द लास्ट मैच ऑफ द डे, नंबर 1 of this prestigious cricket tournament, Kudla Premier League season 8 2023 is now progressing here. Fantastic live coverage we are watching here on YouTube from M9 Sports. और इस बीच गेंदबाज चेतन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. Swings this time, not connected that one properly. In fact, he's got a single. They're looking for the second and they come back for the second easily in the end. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर. और इस बीच गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए चेतन अपने अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और गेंद इस वक्त स्टंप्सों पर टकरा चुकी है. बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है सूरगिरी स्ट्राइकर्स का. 7th विकेट गॉन. दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ. 32 for 7. So fantastic innings came to an end from Nizam. Scored 20 runs into his credit, including 2 boundaries. And after playing a responsible knock of 20 runs, he is backing to pavilion. And a 7th wicket down for 32. निजाम इस वक्त आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं और नए बल्लेबाज नंबर 9 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अगली गेंदबाज चेतन दाहिने हाथों पर द विकेट. बेहतर गेंद थी इस वक्त. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहा और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं. इस बार swings and taken inside the fence. Can't find the gap cleanly and he lost his wicket. 1 more wicket fallen. 8th wicket down. It's 32 for 8. Still 8 balls left in overall calculation in their innings. 8 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में. रात के ठीक 11 इस वक्त बज चुके. इट्स ऑलरेडी 11 o'clock in the night और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ इस देर रात में.
तो इस बीच गेंदबाज चेतन इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बेहतर गेंद थी विकेट कीपर, चूंकि शॉर्ट फाइन लेग पर रन्स नहीं मिलेगा बल्लेबाज के लिए। द स्कोर स्टेज एट 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। लास्ट टाइम इन दिस ओवर द बॉलर चेतन इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज इस वक्त तैयार। पहली गेंद, अगली, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट। अगर कैच लपकते तो यहां पर बेहतरीन कैच कहलाता और इस बार ये विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। तो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एफर्ट मेड बाय द bowler on his follow through at the last moment but unable to grab that ball. Anyway, fantastic effort came from him on his follow through. Have a look at this in the replay and this is an absolutely outstanding effort. Just missed it and run out happened. 9th wicket gone, 32 for 7, 32 for 9 in fact. 7 overs completed, 32 on the board, 9 wickets lost and now just a last over remaining in their innings. Suresh, the bowler, is now starting afresh. In fact, it's a batsman, Suresh. Last batsman of the side. He now comes out to the middle. संतोष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। सुरेश अंतिम बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए यूसुफ और अंतिम जोड़ी इस वक्त मैदान पर। पहली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट संतोष यूसुफ के लिए। Loved it in the air, chance for the bowler himself and took the catch successfully. So the innings is up. They were bundled out for just 32 runs before the 5 deliveries of the stipulated quota. That means in 7.1 overs they were bowled out for 32 and now the target for Kulshekar friends is 33. They have to score for victory in the stipulated 8 overs. Just over 4 runs per over they have to score for victory. That means in exact calculation it's going to be 4.12.5 runs per over they have to score for victory. 4.12.5 the required run rate, exact required run rate for them and let's see can they reach the target or not. और उनके पारी के यहाँ पर कुलशेखर रेफरेंस की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आज अंतिम बार मेरे काबिल दोस्त जनाब स्टार नवाज को इस वक्त आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी में मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आइए नवाज भाई, धन्यवाद, थैंक यू। माता ई बुडला उरुदा चोकुल्लो वंजादु गोब्बुगा कौजीदा मैचन्ना कड़े मुट्टा नलिपुगा उरुदा जवनेरना बिर्सुदा पंता कुड्ला प्रीमियर लीग 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 sketch ఊరుల వికెట్ షురువాండ్ క్రికెట్ సుత్తాల బౌండరీ సిక్సర్ వరుస ఎరుగుతూకా కప్పి వరుస మలయన్న మాదన్న తూయరలి కుడ్లా ప్రీమియర్ లీగ్ కుడ్లా ప్రీమియర్ లీగ్ కుడ్లా ప్రీమియర్ లీగ్ కుడ్లా ప్రీమియర్ లీగ్ కుడ్లా ప్రీమియర్ నన్నమ్మాయి కుడ్లా నేనే బేజార్ మాతా ఈ బుడ్లా ఉరుద చోకులు వంజాదు గొబ్బుగా కౌజీదా మ్యాచ్ నా కడే ముట్ట నలిపుగా ఉరుద జవనేర్న బిర్సుద పంత కుడ్లా ప్రీమియర్ లీగ్
निर्धारित बल्लेबाजी निभाने के बाद केवल 33 रन के लक्ष्य यहां पर दिए हैं। 33 इज द टारगेट फ्रॉम 48 बॉल्स। सुकेश के वो हैट्रिक के बेहतरीन गेंदबाजी, चेतन के 2 ओवर लाजवाब गेंदबाजी। सुकेश ने अपने 2 ओवर पर खर्च किए हैं केवल 5 रन और 4 विकेट लपक चुके हैं सूरगिरी स्ट्राइकर्स के। तो इस वजह से ही रन की कमीपन यहां पर महसूस हुए सूरगिरी के लिए। और उसके साथों साथ आरंभिक ओवर और तीसरी ओवर के इस्तेमाल करने वाले चेतन अपने 2 ओवर के स्पेल पर 7 रन खर्च करने के बाद 3 विकेट की सफलता पाए। नो बॉल के इशारा अंपायर से, पिच से काफी बाहर थी गेंद, तो पिच के लाइन को अगर पार करते हुए पहली टिप्पा यहां पर दिखाते हैं गेंद के, तो ऐसे में नो बॉल की करार अवश्य मिलेंगे। और इस बार गेंद को उछाले मिड विकेट के एरिया पर, कोई फील्डर नहीं जहां पर गेंद टिप्पा खाए। 2 टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन पार किए, गेंद 4 रन। अजमल एंगफ्रेंड सुरवा और अल्ताफ वालपाड़ी की जोड़ी अंडरआर्म क्रिकेट के स्टाइलिस्ट और समझदार क्रिकेटर। दक्षिण कन्नड़ जिला ही नहीं, केरला और सऊदी अरेबिया की मिट्टी पर भी अजमल अपने कमाल की क्रिकेट दिखाए हैं। और इस बार भी शॉर्ट गेंद, ऑफ स्पिन के एरिया पर गेंद को पुश करना चाहते थे, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद की उछाल और बल्ले के बीच छोटी सी अंतरा रह गए। डॉट बॉल, 5 रन बिना कोई नुकसान के आरंभिक ओवर चलते पर। यूसुफ, और इस बार भी लंबी गेंद ऑप्शन से काफी बाहर। वाइड बॉल की इशारा अंपायर हरीश पटेल से। छोटे रन बनाने के बाद शुरुआत पर कड़क गेंदबाजी की निरीक्षा है, लेकिन सुरागिरी स्ट्राइकर्स महंगी साबित होते हुए इनिंग्स के पहली गेंद पर ही नो बॉल के साथ शुरुआत किए थे गेंदबाज यूसुफ द्वारा। यूसुफ तैयार, अजमल के लिए सुंदर शैली के साथ गेंद को सीधे स्क्वायर के एरिया पर फ्लिक कर दिए। 1 रन की समाप्ति, दूसरे रन दौड़ते हुए, और यह चतुराई वाली दूसरे रन। फील्डर के हाथ पर गेंद लगने के बावजूद भी फील्डर और विकेट कीपर के बीच वाले फासला को मापते हुए, उस टाइमिंग को हम अपने दिमाग पर लेने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने समझा कि हम पूरा कर सकते हैं दूसरे रन। यूसुफ, और इस बार सुंदर शैली के साथ अजहरुद्दीन की याद दिलाते हुए अजमल अंडरआर्म क्रिकेट के अजहरुद्दीन के लाते हैं, जिस तरह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन की एक शैली, उनकी साधनाएं आपने देखे हैं, उसी तरह अजमल भी एंगफ्रेंड सुरवा ही नहीं बल्कि जिन जिन टीमों पर अपने योगदान निभाए हैं, उन टीमों को न्याय दिए हैं, अपने ऊपर रखे हुए विश्वास पर खड़े उतरे हैं अजमल। और भेज गेंद को मोड़े, बिल्कुल कोई जवाब नहीं यहां पर, लाजवाब चौका। आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 14 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, 33 इज द टारगेट। तो अब केवल 19 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 19 मोर रन्स टू विन दिस मैच फ्रॉम 42 डिलीवरीज। अगर कुलशेखर फ्रेंड्स तुरंत ही इस मैच को समाप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं रन धारण के वो फायदा भी मिलेंगे। यहां पर अंक पट्टी पर जब टीमों के बीच अंकों की संख्या बराबर हो जाते हैं तो ऐसे समय पर आप जीत हासिल करने की जो फासला है कि किस तरह की जीत आपको मिले हैं, ये वहां पर गिनती पर आ जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर कुलशेखर फ्रेंड्स अगर रन रेट की तरफ दिमाग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत के कुछ चंद ओवरों में ही अगर इस मैच को समाप्त करते हैं तो यह बेहतर होगा आगे आने वाले मैच के लिए। दूसरी तरफ सुरागिरी स्ट्राइकर्स बल्लेबाजी की कमजोरी के बाद
गेंदबाजी में भी आरंभिक ओवर खर्चीले साबित हुए। यूसुफ की गेंदबाजी महंगी साबित हुए। 14 रन खर्च करने के बाद पावर प्ले के दूसरे ओवर की शुरुआत नौफल गोरी के हाथ से। अल्ताफ वालपाड़ी और अजमल की जोड़ी, एक तरफ मैंगलोर के अग्र क्रमांक के खिलाड़ी और दूसरी तरफ है लोकल एरिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, और इस बार निश्चित रूप से काबिल तारीफ, बहुत ही आला स्ट्रोक का ऑफ स्टंप से बाहर निकलने वाली गेंद को अपने ही अंदाज में, अपने रिस्ट के इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट की एरिया की तरफ खींचे, जहां पर कोई फील्डर नहीं नजर आए। अजमल को गैप ढूंढने में माहिर है, मौका ढूंढने में माहिर है अजमल, और इस बार सुंदर शैली के साथ गेंद को इस तरह से जवाब देते हैं कि कभी कभी गेंद भी डर जाते हैं अजमल की बल्ले से, क्योंकि हर गेंद को गेंद की क्वालिटी के अनुसार जवाब देने पर सफल होते नजर आ रहे हैं अजमल। खास करते हुए इस मैदान में तो उनकी तालीम, उनके अनुभव के बारे में कोई सवाल नहीं। नौफल तैयार, और इस बार धीमे गति की गेंद। अल्ताफ वालपाड़ी, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप जानते हैं, आखिरी मौके पर जिस तरह से वो बल्ला को शक्तिशाली रूप पर उठाकर रफ्तार के साथ गेंद के साथ टक्कर बनाते हैं, लेकिन यहां पर भी पिछली गेंद पर उछालना चाहते थे, लेकिन गेंद की उस गति को देखने के बाद आखिरी मौके पर छेड़ दिए गेंद को ऑफ साइड के एरिया पर। एकमात्र सिंगल रन मिले, और उसके बाद अजमल भी धीरे धीरे से स्ट्राइक रोटेट करते हुए बिना कोई गेंद बिंदी बनाए, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं, 33 रन के लक्ष्य, और इस बार भी छेड़ना चाहते थे लेकिन ना, फलितांश यहां पर अच्छी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन कुल मिलाकर 20 रन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर, पूरे 10 विकेट सुरक्षित हाथ पर। अब केवल 13 रन पीछे खड़े हैं, गेंदों की संख्या तो 36 गेंद सामने खड़े हैं कुलशेखर फ्रेंड्स के लिए। चेतन, यंग फ्रेंड्स उर्वा के अजमल, मूड बिद्रे के शान अल्ताफ वालपाड़ी, एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ियां, विश्वसनीय खिलाड़ियां, और आज तो निश्चित रूप से निराशा नहीं की है कुलशेखर फ्रेंड्स टीम के मालक को और उनके चाहने वालों को। और इस बार जाड़ू की कोशिश, और लेग बिफोर के अपील, पुरस्कार मिले। अजमल खुश नहीं थे निर्धार से, तो स्वीप करने के समय अंपायर की मानना यह था कि विकेट के सामने उनके शरीर पर लगे थे गेंद, तो लेग बिफोर विकेट के शिकार बनने के बाद पेविलियन की तरफ कदम बढ़ाते हुए अजमल। केवल मात्र 13 रन बाकी, यह आखिरी मैच है आज के केपीएल 2023, 4 दिन के क्रिकेट के त्योहार, द आईपीएल ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट, कुडला प्रीमियर लीग 2023 सीजन 8, श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू और एंगफ्रेंड सुरवा के संयोग के साथ 8वीं सीजन आप देख रहे हैं। संतोष जप्पू, संतोष बंटवाल और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू के कई सारे महारथियां इस श्रृंखला को कामयाब बनाने के लिए योजना बना रहे हैं। दिन और रात के ये मैच, हर एक अंडरआर्म खेलने वाले खिलाड़ियों को इंतजार थे इस श्रृंखला के कि कब शुरुआत होंगे केपीएल, क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिता में जब मौका मिलते हैं खिलाड़ियों को और उस मौके के फायदा उठाकर उनके नाम जब रोशन हो जाते हैं, सामाजिक जालतान पर वायरल होने लगते हैं उनके नाम, उनके क्रिकेट, उनकी क्षमता, तो इस वजह से सभी खिलाड़ियों की ड्रीम है ये केपीएल। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलने वाले ज्यादातर प्रोफेशनल क्रिकेटर जिंदगी में एक बार आईपीएल खेलने की सपना रखते हैं अपने क्रिकेट के जीवन में। उसी तरह से केपीएल भी बिल्कुल आईपीएल से कम नहीं है, अंडरआर्म क्रिकेट के आईपीएल है ये केपीएल। तो यहां पर भी चाहे वो मुड़बिद्रे से हो, कारकला से हो,
बेलतंगड़ी डिस्ट्रिक्ट से हो, कासरगोड जिला से हो, मैंगलोर से हो, जहां जहां भी अंडरआर्म क्रिकेट की पेशकश आपको देखने को मिलते हैं, उन तमाम जगहों से आए हुए खिलाड़ियों के सपना है कि वो केपीएल पर चमके, यहां पर उन्हें नाम मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि केपीएल पर नाम मिलने के बाद भविष्य बनाना इतने मुश्किल बिल्कुल नहीं है अंडरआर्म क्रिकेट पर। तो ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन, 25। और इस अंडरआर्म क्रिकेट की कदर देखने के बाद M9 स्पोर्ट्स भी अंडरआर्म की तरफ, चुंबक की तरह अंडरआर्म क्रिकेट की तरफ आकर्षण हुए और उन्होंने भी चाहा कि हमारी चैनल के जरिए अंडरआर्म क्रिकेट की एक एक पेशकश भी देखना चाहिए लोग। M9 स्पोर्ट्स के तमाम सिब्बंदियां, ऑफिशियल स्टाफ, टेक्नीशियंस, कैमरामैन जबरदस्त काम निभाते हुए आज के लाइव टेलीकास्ट पर, सफाई हो, मिक्सर के काम जो भी हो, तो इस श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों को हम धन्यवाद कहते हैं। वाकई ऑफिशियल के सेवा के बिना क्रिकेट प्रतियोगिता संपूर्ण बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। अल्ताफ वालपाड़ी लंबे स्ट्रोक के सरदार है, ये अल्ताफ वालपाड़ी बड़े बड़े शॉट को यूं ही चुरा लेते हैं, मैदान चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, लेकिन अल्ताफ वालपाड़ी के लिए कोई परेशानी नहीं। वाइड बॉल की इशारा अंपायर से, बल्ले से बनने वाले काम अब गेंदबाजी की कमजोरी से दिखाते हुए सुरागिरी स्ट्राइकर्स। इस बार अच्छी गेंद, कलात्मक शैली के साथ गेंद को रोके, गेंदबाज की दिशा पर गेंद को खेलने के बाद रन की कोई कोशिश बिल्कुल नहीं। और 12 अच्छी थी गेंद, संतोष के लिए एक अनुभवी ऑलराउंडर, टैलेंटेड क्रिकेटर। मैदान पर तो टीनेज के युवा खिलाड़ियों की तरह अपने बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, एक एनर्जेटिक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं संतोष से। अच्छे अनुभव के साथ अपने कैरियर दिखा चुके हैं और इस बार शानदार स्ट्रोक, बहुत ही शैली के साथ। रन भले ही एक मिले हो, लेकिन बल्लेबाजी की जो शैली थी वो गेंद को पिक करने की शैली, अपने बाएं पैर को झुकाने के बाद जिस तरह से वो क्रीज पर झुके और बल्ले को आड़ा गिराकर गेंद को सीधे मिड विकेट के एरिया पर खेले। एक सिंगल रन और 2 रन, और इसी के साथों साथ रनों की संख्या 31 रन। अब 2 रन बाकी है जीतने के लिए, 33 रन के लक्ष्य है। 33 इज द टारगेट। केवल मात्र 2 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। निजाम, अच्छी गेंद, विकेट को गिरा चुके हैं, यहां पर गिल्लियां उड़ चुकी हैं। संतोष पुश करना चाहते थे, लेकिन गेंद टिप्पा करने के बाद एक अच्छे चलान के साथ स्विंग दिखाए, बल्ले और पैर के बीचों बीच से गुजरते हुए गेंद सीधे विकेट पर टकराए। शानदार गेंद। दूसरे विकेट के रूप पर संतोष के निर्गमन। तो अब जीत के उस बाकी बचे 2 रन बनाने के लिए नए खिलाड़ी अल्ताफ वालपाड़ी के साथ जुड़ रहे हैं सुकेश ऑलराउंडरों में माने जाते हैं। सुकेश को अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन ऑफ कटर और लेग कटर दिखाते हैं अपनी गेंदबाजी में। और इस बार भी अच्छी गेंद, लेग बिफोर की अपील। निजाम, नकार दिए इसे का अपील को। अंपायर की मानना यह था कि खतरे खड़े करने वाली कोई बात नहीं थी उस गेंद पर। निजाम अगली गेंद को लेकर तैयार, और इस बार भी उछालने के प्रयास। अपील तो जारी रहे हर गेंद पर। लेग बाय के इशारे के साथ 1 रन स्कोर बोर्ड पर जमावट होते ही रनों की संख्या बराबर हो चुके हैं, मैच टाई हो चुके हैं। अब आखिरी रन की जरूरत है कुलशेखर फ्रेंड्स को।
और इस बार ऑप्शन से बाहर थे गेंद, छेड़े, लेकिन फील्डर ने बिल्कुल कैच छोड़ने की कोई बात सोचा ही नहीं, क्योंकि एक अच्छी क्रिकेट श्रृंखला में सच्चे क्रिकेट हमेशा होना चाहिए, किसी भी तरह के समझौता नहीं। आखिरी रन 31 तक कोई दबाव नहीं नजर आए या कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके बाद 2 रन बनाने के लिए 4 खिलाड़ियों के इस्तेमाल करने पड़े यहां पर। और इस बार गेंद को उछाले लॉन्ग ऑन की तरफ, और इसी के साथ कुलशेखर फ्रेंड्स जीत हासिल कर चुके हैं इस बाउंड्री के साथ। कंग्रेचुलेशंस। और सुरगिरी स्ट्राइकर्स के लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगली बार आपकी गलतियों को सुधार कर आ जाइएगा जीत के विश्वास के साथ। तो आज के दिन के मैच यहां पर समाप्त होते हैं। कल के दिन डे 2 दूसरे दिन के मैच